Assalamu alaikum. My name is Zahir Abbas. I have done my BS from Sarvodaya University and MPhil from Minha University, Lahore. And currently I am doing PhD from Agriculture University, Faisalabad. And recently I have submitted my PhD thesis on the topic some robust control charts based on combined structures. Now today we are going to discuss one of very important topic known as sampling. Now, what is sampling? Sampling is a process of selecting a part of population, and that part of population represent the whole population. And then I have used here two words. One is sample and another word is population. Now, what is sample? Sample is a subset of population, and population is a aggregate of all the objects under study. Look at the example here. As you can see, look at the example. As you can see, there is a population and then there is a sample. Now, we have defined population various types. There are four basic categories of population. One is finite population, another is infinite population, real population, and hypothetical population. So similarly, we have go with samples. Samples, as I have already defined, it is a subset of the population and it is a proportion drawn from the population. We may come with survey and sample survey and census. What is census? Census is a complete enumeration, means that we have select every unit from the population. That is known as census. And if we are going to study apart from the population, then we go with the sampling survey. Now, as I have defined what is sample, what is population, and what is census, what is survey, now we are going to discuss the definition of sampling. Sampling is a process used in statistical analysis in which predetermined number of observations are taken from larger populations. And this process, you can see that here is a whole population and here is a sample draw from that population. Now, one very important concept here is what is sampling unit? Sampling unit is one of the very important concept, and when we are going before the sampling, we create a sampling units, then we go toward the sampling. So what is sampling unit? Before selecting the sample, population must be divided into parts. That parts are called sampling units. आप यहाँ पे देखें, हमने इस पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. लाइक यहाँ पे आपको रेड नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको येलो नजर आ रहे हैं. तो ये जो ग्रीन येलो रेड ग्रुप्स हैं, इनको हम बोलेंगे सैम्पलिंग यूनिट्स. और देन इन सैम्पलिंग यूनिट में से जो हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे सैंपल. Okay, now what is then sampling frame? Sampling frame is list from which units are drawn for a sample. So it is a complete list of all the sampling units which are included. And then very important term is sampling distribution. So sampling distribution is a theoretical distribution for a sample statistic. The sample distribution of statistics, distribution of all possible value taking from the all samples of the fixed size n. So every population has certain type of distributions, and most of the time we are considered the following properties for a sampling distributions.
The overall shape of the distribution is symmetric and approximately normal. There is no outlier or important deviation from overall pattern, and the center of the distribution is very close to the true population. And so, in this lecture, I have concluded in few words. First of all, हमने देखा कि sample क्या होता है, population क्या होता है, सैंपल जो सब पार्ट है पॉपुलेशन का और पॉपुलेशन एग्रीगेट है। फिर हमने देखा कि हम सैम्पलिंग की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि हम ईच एंड एवरी यूनिट पॉपुलेशन का सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे यूज़ होंगे, ज़्यादा टाइम यूज़ होगा, और उसके ऊपर जो नॉन सैम्पलिंग एरर के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो उस केस से बचने के लिए हम लोग जाते हैं सैंपल की तरफ। सैंपल्स के रिजल्ट एक्यूरेट आ जाते हैं, नियरली पॉपुलेशन पैरामीटर्स के पास होते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सैम्पलिंग सर्वे क्या है, सैंपल सर्वे क्या है, और सेंसस क्या होता है। सैंपल सर्वे वही पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि हम स्टडी करते हैं। इसके बाद सेंसस में हम कंप्लीट इनोमिनेशन कर लेते हैं। देन हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, जो कि हम पार्ट्स बना लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन का। उनमें से फिर हम आगे सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस और उसकी प्रॉपर्टी। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम लोग ये सैम्पलिंग कैसे करते हैं या सैम्पलिंग की टाइप्स क्या हैं। वो बेसिकली दो टाइप्स होती हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में चले जाते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी हमारे पास आगे बहुत सारी टाइप्स है, जिनमें मोर 4 कैटेगरीज आती हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ गया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आ गया, क्लस्टर सैम्पलिंग आ गया, इसी तरह और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ गया। नॉन प्रोबेबिलिटी में चले जाएं तो हमारे पास कोटा सैम्पलिंग आ जाएगी, पॉजिटिव सैम्पलिंग आ जाएगी, जजमेंट सैम्पलिंग आ जाएगी। Okay. Allah Hafiz. I hope you understand this topic. Allah Hafiz.